Assalamu alaikum. Advocate Amir Hamza here with you. Today I will discuss with you 2024 SCP 75 Service Dismissal. In the Supreme Court of Pakistan, Mr. Justice Jamal Khan Mandukhair, Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar, Civil Petition number 152 of 2022, passed by Punjab Service Tribunal Lahore. In Appeal number 1674 2021, Waqas Shehzad Petitioner versus Inspector General Police Punjab Lahore and other respondent for the petitioner uh, for respondent Malik Wasim Mazhar, Mr. Ataullah Mustafa. Date of hearing at 23/11/2023. Judgment Muhammad Ali Mazhar Justice. This civil petition for leave to appeal is directed against the judgment dated 17/11/2021 passed by the Punjab Service Tribunal Lahore in appeal number 1674/2021, whereby the service appeal filed by the petitioner was dismissed. Para number 2. The short-lived facts of the case are that the petitioner, while posted as ex-security constable of Special Protection Unit, was pressed by the Additional District Security Special Protection Unit SPU Lahore pursuant to the charge sheet date 5/11/2019 and the statement of allegation issued under the provisions of the Punjab Police Effective and Discipline Rule 1973. The gist of the allegation is as under as per contents of the self-explanatory application received in the office White Diary number 17344 dated 18/11/2019 submitted by Mr. Farhat Ashi, wife of Muhammad Aslam, resident of village Basina, Lahore, holding CNIC number. A fact-finding report was sought from Deputy Director Security SPU Wing Number 1 Lahore and as per contents of the report following has been revealed. अब हम इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदूख है, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर दरख्वास्त गुजार है वकास शहजाद बमुकाबला इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब लाहौर और दीगर. इसमें है समाअत की तारीख 23/11/2023. जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ये सिविल पिटीशन के फैसले के खिलाफ अपील की हदायत की गई कि 17/11/2021 पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल लाहौर ने अपील नंबर में मंजूर किया, जिसके तहत दरख्वास्त गुजार की तरफ से दायर सर्विस अपील नंबर 1674/2021 बरतरफ. पारा नंबर 2 मुकदमे के कलील मुद्दती हक़ाइक़ ये है कि दरख्वास्त गुजार पोस्ट के दौरान स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के साबका सिक्योरिटी कांस्टेबल के तौर पर इससे पहले था बटालियन एसपीयू एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट नंबर 2 लाहौर. चार्जशीट मूर्खा 5/12/2019 के मुताबिक और पंजाब की दफात के तहत जारी इल्ज़ामात का बयान. पुलिस की कारकर्दगी और नज़्म व ज़ब्त के कवायद 1973 इल्ज़ामात का खुलासा ये है कि हस्ब ज़ैल इस दफ्तर में मौसूल होने वाली खुद वज़ाहती दरख्वास्त के मंदरजात के मुताबिक डायरी नंबर 17344 मोरखा 18/11/2019 मिसेस फरद की तरफ से जमा कराएगी. आशी बीबी मोहम्मद असलम साकन गांव बेसन लाहौर नंबर सो रखने पर फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट की तलब की गई. CNIC नंबर लाहौर से मंदरजात के मुताबिक 1 विंग SPU डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी रिपोर्ट में मंदरजा इंकशाफ किया गया. अब इसके हम पैरा नंबर 2 पेज नंबर 2 पे आ गए हैं. सेक्रेटरी कांस्टेबल सिक्योरिटी कांस्टेबल आसिफ अली 1142 SCX
Chinese camps. Manawa was murdered in a civilian house owned by Mr. Aslam Rana in village Basin, approximately 3 km away from police station Watapur near PRB Canal on night 10th 11th March 2019. Number 2, Security Constable Asaf Ali 1142 SC, uh, deceased. Talha Zubair 1184 SC and you were called by the girls, namely Rukhsar and Muskan of village Basin. Both girls are real sister and are daughter of Mr. Muhammad Aslam Rana. You, along with other constable, reached village Basin and entered the girl's house on the direction of Miss Rukhsar through her cell phone. Number 3, Talha Zubair was also got injured in the above civilian house due to pistol shoot fired by Mr. Muhammad Aslam Rana, the father of Rukhsar and Muskan. The bullet hit both his legs, however, he ran away and managed to reach Munawa Hospital for first aid. After getting the first aid, Talha Zubair, along with you, come back to duty place as per normal routine and without informing about the said case to anyone. Number 4, the motorbike Honda 125 owned by you was used to going to village Basin and back, who kept on waiting for both the other SCS outside the village. Number 5, after getting injured, Talha Zubair was picked up by you from Basin village and dropped at Manawa Hospital for necessary treatment, and after that you both came back to camp and joined your duty as per the normal routine. Number 6, hence you were fully involved in this case. Security Constable Asaf Ali number 1142 SC and Tala Zubair number 1164 SC left to camp for by telling false story of several pain in abundance of security constable Asaf Ali 1142 SCU also come out from 63B Medical Society residence by telling a false story of meeting your guests. Number 7, in this way you proved yourself quite ill disciplined, ineffect, inefficient, and irresponsible, careless police officer in the discharge of official duty, which warrants stamp departmental action against you. Number 3, the petitioner in his reply denied the allegation. Therefore, the Assistant Director Security Special Protection Unit SPU Wing 1 Lahore was appointed as the inquiry officer to conduct an inquiry into the allegation leveled against the petitioner. Upon receipt of the inquiry report, the additional district security SPU uh, Battalion Number 2 Lahore provided the petitioner with an opportunity for a personal hearing. Eventually, the petitioner was awarded a major penalty of dismissal from service void order dated 13/5/2020. Subsequently, the petitioner filed departmental appeal from the Deputy Inspector General of Police SPU Punjab Police Lahore, which was rejected void order dated 30/9/2020. Thereafter, the petitioner filed revision before the Inspector General of Police Punjab Lahore, but the same was also rejected void order dated 4/3/2021. Against the dismissal of the revision,
The petitioner filed an appeal in the Punjab Service Tribunal, Lahore, which was dismissed void the impugned judgment dated 17/11/2021। CP नंबर 152/2022, सफ़ा नंबर 2। हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। साहब का चीनी कैंप एससी सिक्योरिटी कांस्टेबल आसफ अली 114 मुनावा को मिनिस्टर असलम की मलकियत में एक शहरी घर में कत्ल किया गया था। राना गांव बेसन में पुलिस से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर नहर के करीब स्टेशन बाटापुर बीआरबी पंजाब 2019 की रात 10/11 मुतवफ़्फ़ी तलहा ज़ुबैर एससी सिक्योरिटी कांस्टेबल आसफ अली 1142 और आपको रुखसार और लड़कियों ने बुलाया 1184 गांव बेसन में मुस्कान दोनों लड़कियां हकीकी बहनें हैं जनाब मोहम्मद असलम राना की बेटियां हैं। आप दूसरे के साथ कांस्टेबल गांव बेसन पहुंचे और लड़कियों के घर में दाखिल होने में रुखसार की हदायत अपने सेल फोन के जरिए मज़कूरा शहरी के घर में तलहा ज़ुबैर भी ज़ख्मी हुआ। मिस्टर मोहम्मद असलम राना की तरफ से पिस्तौल की गोली लगने से रुखसार और मुस्कान के वालिद गोली इसके दोनों टांगों में लगी, तहाँ वो भागकर मनावा अस्पताल पहुंचने में कामयाब हो गया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद तलहा ज़ुबैर भी आपके साथ मामूल के मुताबिक बगैर ड्यूटी के मुकाम पर वापस आया। मज़कूरा केस के बारे में किसी को आगाह न करा जाने की आदत होंडा 125 आपकी मुल्कियत वाली मोटरसाइकिल बाइक का इंतज़ाम करते रहे और गांव बेसन और पहुंचे जो दूसरे दोनों गांव के बाहर है। जख्मी होने वाले तलहा ज़ुबैर को आपने वहां से उठाया और बेसन गांव और ज़रूरी के लिए मनावा अस्पताल छोड़ दिया गया, इलाज किया और इसके बाद आप दोनों कैंप में वापस आए और शामिल हो गए मामूल के मुताबिक आपकी ड्यूटी पर। इसलिए आप इस केस में पूरी तरह मुलव्वस थे। सिक्योरिटी कांस्टेबल बजरिया कैंप्स रोजाना एससी और तलहा ज़ुबैर एससी 1164 आसफ अली नंबर 1142 सिक्योरिटी कांस्टेबल के पेट में शदीद दर्द की छुट्टी की कहानी सुनाया। मेडिकल सोसाइटी से भी निकले आप 63 एससी आसफ अली और 1142 अपने मेहमानों से मिलने की छुट्टी कहानी सुनाकर रहायश पर। इस तरह आपने अपने आपको काफ़ी बदनज़मी और नाअहल साबित किया है और एहलकार की बरतरफी में गैर जिम्मेदार लापरवाह पुलिस एहलकार ड्यूटी जो आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की ज़मानत देती है। दरख्वास्त गुजार ने अपने जवाब इल्ज़ामात की तरदीद की, लिहाजा विंग नंबर 1 एसपीयू असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट लाहौर का इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया। दरख्वास्त गुजार पर लगाए गए इल्ज़ामात इंक्वायरी की वसूली पर रिपोर्ट एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी एसपीयू बटालियन नंबर 2 लाहौर दरख्वास्त गुजार को ज़ाती समाअत का मौका फराहम किया। बिला आखिर दरख्वास्त गुजार को बर्खास्तगी की बड़ी सज़ा सुनाई गई। सर्विस के ज़रिए आर्डर मोरखा 13/5/2020 से इसके बाद दरख्वास्त गुजार के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के सामने महकमा अपील दायर की गई। पुलिस एसपीयू पंजाब लाहौर जिसके हुक्मनामे के मुताबिक मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद दरख्वास्त गुजार ने इंस्पेक्टर के सामने रिवीजन दायर किया 30/9/2020 जर्नल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर, लेकिन इसे भी मुस्तरद कर दिया गया। आर्डर मोरखा 4/3/2021 नज़रसानी की बर्खास्तगी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार ने पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल लाहौर में अपील दायर की और मोरखा 17/11/2021 के गैर कानूनी फैसले के जरिए खारिज कर दिया गया। सीपी नंबर 152/2022 पेज नंबर 3 इसका पैराग्राफ नंबर 4 है। द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर आर्ग्यूड that the tribunal failed to appreciate the fact and law of the case in its true perspective, drawing driving wrong conclusion that result in a serious miscarriage of justice. He further argued that the petitioner, who had been performing his duty efficiently and had been issued
appreciation certificate for wrongly dismissal. It was further aware that while passing the impugned order, the learner tribunal filed the to consider that not a single allegation was proved against the petitioner. The learned counsel contended that the inquiry was not conducted properly and the competent authority passed the dismissal order on the recommendation of the inquiry officer without applying its judicial mind. Para number 5. On the other hand, the learner additional advocate General Punjab argued that after a proper inquiry, the petitioner was found guilty and dismissal from service in accordance with the law. Moreover, all codal formalities were complied with before passing the dismissal order. According to him, the DSP, Assistant District Security SPU Wing Number 1 Lahore, as the inquiry officer, provided ample opportunity to the petitioner during the regular inquiry. The petitioner was found guilty of incompetence and he was rightly dismissed from service, keeping in view the gravity of the charge. Para number 6. Here the argument the learned tribunal minutely considered the gravity of the allegation and the inquiry proceeding conducted by the inquiry officer. The petitioner was provided ample opportunity to defend the charge and prove his innocence. The gist of the inquiry report accentuate that the petitioner was found indulging in some illegal activities uh, and been personnel of the disciplined force. The disciplinary action was rightly taken by the competent authority. Number 7. At this junction, we would like to take up one more significant issue which has a direct nexus with the case. The petitioner filed the appeal before the learned tribunal not against the appellant before but the order passed in the revisional application which the petitioner preferred after the dismissal of his department appeal rather than approaching the tribunal against the appellant order. The service appeal was preferred against the revisional order. Section 21 of the Punjab Civil Servant Act 1974 provides that where a right to prefer an appeal for अब इसका हम सफ़ा नंबर 3 पे है उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं दरख्वास्त गुजार के माहिर वकील ने दलील दी कि ट्रिब्यूनल नाकाम रहा है कि इसके हक़ाइक़ और कानून को इसके हकीकी तनाज़र में समझाना वक्त नताइज अखज़ करना जिसके नतीजे में संगीन इस्तेक़ात हमल हुआ इंसाफ। उन्होंने मज़ीद दलाल देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार जो परफॉर्म कर रहे हैं अपने फ़राइज़ को एहसन तरीके से सरअंजाम दिया और तारीफ़ी असनाद भी जारी की। गलत तरीके से बरतरफ ये मज़ीद कहा गया कि गुज़रते वक्त हुक्म इम्तनाई सीखा हुआ ट्रिब्यूनल इस बात पर गौर करने में नाकाम रहा। हुक्म इम्तनाई सीखा हुआ ट्रिब्यूनल इस पर गौर करने में नाकाम रहा। दरख्वास्त गुजार पर इल्ज़ाम साबित हो गया। सीखा हुआ मशीर इस्तदलाल किया है कि इंक्वायरी सही तरीके से नहीं की गई और मुजाज अथॉरिटी ने बरतरफी का हुक्म जारी किया। इंक्वायरी ऑफिसर की सिफारिशात इसका अदालती इतलाक़ किए बगैर दिमाग। दूसरी तरफ माहिर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब दलील दी कि मुनासिब इंक्वायरी के बाद दरख्वास्त गुजार को कसूरवार पाया गया और कानून के मुताबिक मुलाजमत से बरतरफ। मजीद ये कहा कि तमाम कोडल बरतरफी का हुक्म मंजूर करने से पहले रस्मी कार्रवाइयों की तमील की गई। इनके मुताबिक DSP असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी SPU विंग नंबर 1 लाहौर ने बतौर इंक्वायरी ऑफिसर काफ़ी मौका फराहम किया।
बाकायदा इंक्वायरी के दौरान दरख्वास्त गुजार का कसूरवार ठहराया गया, नाअहली और बजा तौर पर खिदमत में रहते हुए बरतरफ कर दिया गया। चार्जेस की कशक शकल देखें। दलाइल से सीखे हुए ट्रिब्यूनल ने बारीकबीनी से गौर किया। इल्ज़ामात की संगीनी और इंक्वायरी की कार्रवाई की तरफ से की गई इंक्वायरी ऑफिसर दरख्वास्त गुजार को दफ़ा का भरपूर मौका फराहम किया गया। इल्ज़ामात लगाए और अपनी बेगुनाही साबित करने। इंक्वायरी रिपोर्ट का खुलासा इस बात पर जोर दिया गया कि दरख्वास्त गुजार कुछ गैर कानूनी कामों में मुलव्वस पाया गया। सरगर्मियाँ और एक नज़्म व ज़ब्त फोर्स का अहलकार होना। नज़्म व ज़ब्त मजाज अथॉरिटी की तरफ से वजह तौर पर कार्रवाई की गई। इस मौके पर हम एक अहम मसला उठाना चाहेंगे जिसका केस से बराह रास्त ताल्लुक है। दरख्वास्त गुजार ने अपील दायर की सीखे हुए ट्रिब्यूनल के सामने अपीलेट के हुक्म के खिलाफ नहीं बल्कि नज़रसानी की दरख्वास्त में हुक्म दिया गया कि जिस दरख्वास्त गुजार ने तरजीह दी इसकी महकमाना अपील खारिज होने के बाद करीब आने के बजाय अपीलेंट आर्डर के खिलाफ ट्रिब्यूनल सर्विस अपील की थी। नज़रसानी आर्डर के खिलाफ तरजीह दी गई। पंजाब सिविल का सेक्शन 21 सर्वेंट एक्ट 1974 फराहम करता है कि जहां अपील को तरजीह देने का हक है। अभी इसके पेज नंबर 4 पर आते हैं। 2020 seconds. Page number 4. Apply for review in respect of any order relating to the terms and conditions of service is allowed to a civil servant by any rules applicable. Such appeal or application shall, except as may otherwise be prescribed, be made within 60 days of the communication of such other. And it is further provided that where no provision for appeal or review exists in the rules in respect of any order, a civil servant aggrieved by any such order may, except where such order is made by the governor, within 60 days of the communication of such order, make a representation against it to the authority next above the authority which made the order. 8. In unison, Section 4 of the Punjab Service Tribunals Act, 1974 postulates that any civil servant aggrieved by any final order, whether original or appellate, made by a departmental authority in respect of any of the terms and conditions of his service may, within 30 days of the communication of such order to him, prefer an appeal to the tribunal. The proviso attached to the aforesaid section expounds that where an appeal, review or representation to a departmental authority is provided under the Punjab Civil Servants Act, 1974 or any rules against any such order, no appeal shall lie to a tribunal unless the aggrieved civil servant has preferred an appeal or application for review or representation to such departmental authority and a period of 90 days has elapsed from the date on which such appeal, application or representation was so preferred. With the rider that where the appeal is against an order or decision of a departmental authority imposing a departmental punishment or penalty on a civil servant, the appeal shall be preferred. In the case of a penalty of dismissal from service, removal from service, compulsory retirement or reduction to a lower post or timescale or to a lower stage in a timescale, to a tribunal referred to in subsection 3 of section 3, and in any other case, to a tribunal referred to in subsection 7 of section 3. 9. Contemporaneously, Section 16 of the Punjab Employees Efficiency, Discipline and Accountability Act, 2006 meets out the provision of departmental appeal and review, wherein an accused who has been awarded any penalty under this act may, except where the penalty has been imposed by the Chief Minister, within 30 days from the date of communication of the order, prefer departmental appeal directly to the appellate authority, provided that where the order has been passed by. अभी हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। सफ़ा नंबर 4। शराइत के मुताबिक किसी भी हुक्म के सिलसिले में नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दें। सर्विस की शराइत किसी भी काबिल इतलाक़ कवायद के ज़रिए सरकारी मुलाज़िम को इजाज़त दी जाती है
ایسی اپیل یا درخواست سوائے اس کے کہ جو دوسری صورت میں تجویز کی گئی ہو اس طرح کے دوسرے کی بات چیت کے 60 دن کے اندر کیا جائے، اور یہ مزید بشرطے کہ جہاں اپیل یا نظر ثانی کی کوئی شک موجود نہ ہو۔ کسی بھی حکم کا سلسلے میں قواعد: ایک سرکاری ملازم جو اس طرح کے کسی سے ناراض ہو حکم دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ جہاں گورنر ایسا حکم دے۔ اندر اس طرح کے حکم کے مواصلات کے 60 دن ایک نمائندگی کرتے ہوئے اس کے خلاف اگلی اتھارٹی سے اوپر والی اتھارٹی کو جس نے بنایا۔ ترتیب نمبر 8 یکجہتی کے ساتھ پنجاب سروس ٹریبیونل ایکٹ 1974 کی دفعہ نمبر 4 فرض کرتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم کسی حتمی حکم سے ناراض ہو جائے اصل یا اپیل کے سلسلے میں محکمانہ اتھارٹی کے ذریعے بنایا گیا ہے، اور اس کی سروس کی شرائط و ضوابط میں سے کوئی بھی 30 دنوں کے اندر اس طرح کے حکم کی بات چیت کے لیے اپیل کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹریبیونل مذکورہ دفعات کے ساتھ منسلکہ شرائط کی وضاحت کرتی ہے۔ جہاں اپیل نظر ثانی یا محکمہ اتھارٹی کو نمائندگی دی جاتی ہے، پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1974 کے تحت فراہم کیا گیا ہے یا اس کے خلاف کوئی اصول، اس طرح کے کسی بھی حکم کے خلاف ٹریبیونل میں کوئی اپیل نہیں کی جائے گی جب تک کہ متاثرہ نہ ہو۔ سرکاری ملازم نے نظر ثانی کے لیے اپیل یا درخواست کو ترجیح دی ہے، اس طرح کے محکمہ اتھارٹی کی نمائندگی اور 90 دن کی مدت اس تاریخ سے دن گزر چکے ہیں جس پر ایسی اپیل، درخواست یا نمائندگی کو ترجیح دی گئی، سوار کے ساتھ جہاں تک اپیل ہے محکمہ اتھارٹی کے حکم یا فیصلے کے خلاف کسی سرکاری ملازم پر محکمانہ سزا یا جرمانہ کی اپیل کی جائے گی، ترجیح دی جائے سروس سے برخاستگی برطرف کے جرمانے کی صورت میں، سروس سے لازمی ریٹائرمنٹ یا نچلی پوسٹ تک کمی، یا ٹائم اسکیل میں نچلے مرحلے تک، جس کا حوالہ دیا گیا ٹریبیونل کے پاس۔ سیکشن 3 کی ذیلی سیکشن 3 اور کسی دوسرے معاملے میں ٹریبیونل کو سیکشن 3 کی ذیلی دفعہ 7 میں حوالہ دیا گیا ہے۔ نمبر 9 اصلی طور پر پنجاب ملازمین کی کارکردگی کا سیکشن 60 نظم و ضبط اور احتساب کا ایکٹ 2006 کی دفعات کو پورا کرتا ہے۔ محکمانہ اپیل اور نظر ثانی جس میں ایک ملزم جو رہا ہے اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی جرمانہ دیا جا سکتا ہے سوائے اس کے جہاں جرمانہ ہو کی تاریخ سے 30 دن کے اندر وزیر اعلیٰ کی طرف سے نافذ کیا گیا۔ آرڈر کی بات چیت محکمانہ اپیل کو براہ راست ترجیح دی اپیلنٹ اتھارٹی بشرطے کہ جہاں سے حکم دیا گیا ہو۔ ابھی ہم اس کے نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ 52 2020 seconds. Page number 5. The Chief Minister, the accused may, within the aforesaid period, submit a review petition directly to the Chief Minister. The authority empowered to consider the appeal or review petition may, by an order in writing, a. Uphold the order of penalty and reject the appeal or review petition, or b. Set aside the orders and exonerate the accused, or c. Modify the orders and reduce or enhance the penalty, or d. Set aside the order of penalty and remand the case to the competent authority. Where it is satisfied that the proceedings by the competent authority or the inquiry officer or inquiry committee, as the case may be, have not been conducted in accordance with the provisions of this Act, or the facts and merits of the case have been ignored, with the directions to either hold a de novo inquiry or to rectify the procedural lapses or irregularities in the proceedings. In case the appellate or review authority proposes to enhance the penalty, it shall by an order in writing inform the accused of the action proposed to be taken against him and the grounds of such action, and also give him a reasonable opportunity to show cause against the action and afford him an opportunity of personal hearing. Whereas, Section 17 of the same Act relates to revision, under which the Chief Minister, Chief Secretary or the Administrative Secretary or any other appellate authority may call for the record of any proceedings within 1 year of the order of exoneration or imposition of a penalty passed by the competent authority or the order of appellate authority, as the case may be,
for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of such proceedings or order, and on examining the record of the case, such authority may uphold the orders of the competent authority or the appellate authority, as the case may be, or order the competent authority to hold de novo inquiry, or impose or enhance a penalty or penalties, with the proviso that no order, prejudicial to the accused, shall be passed under this section unless the accused has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action and an opportunity of personal hearing. Concomitantly, Section 19 of the Act divulges that an employee, other than the employee mentioned in Section 2, H.I., aggrieved by a final order passed under Section 16 or the 17th of May, within 30 days from the date of communication of the order, prefer an appeal to the Punjab Service Tribunal. 10. In collocation, the Punjab Police, Efficiency and Discipline Rules, 1975. Rule 12 cannot be dispensed with, which also pertains to the अभी हम इसके सफ़ा नंबर 5 पर हैं। वज़ीर आला मुल्ज़मान मज़कूरा मुद्दत के अंदर जमा करा सकते हैं। नज़रसानी की दरख्वास्त बराह रास्त वज़ीर आला को अथॉरिटी को बाख्तियार बनाया। अपील या नज़रसानी की दरख्वास्त पर गौर करना तहरीरी हुक्म के ज़रिए, जुर्माने के हुक्म को बरकरार रखना, अपील या नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद करना या तरमीम करना। सी. अहकामात को एक तरफ रखना और मुल्ज़म को बरी करना, या बी. हुक्म दे और जुर्माने को कम या बढ़ा दे। डी. के आर्डर को एक तरफ रख दे और जुर्माने और केस को मुजाज अथॉरिटी के हवाले करे, जहाँ ये मुतमिन हों कि मुजाज अथॉरिटी की कार्रवाई या इंक्वायरी अफसर या इंक्वायरी कमेटी जैसा कि मामला हो नहीं रहा है। इस एक्ट की दफात या हक़ाइक़ और के मुताबिक अंजाम दिया गया है। केस की खूबियों को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसमें या तो एक मुनअक्कद करने की हिदायत दी गई है, डी. नो इंक्वायरी या तरीक़ाकार की खराबी या बेज़ाब्तगियों को दूर करने के लिए कार्रवाई। अगर अपीलेट या रेवेन्यू अथॉरिटी तजवीज़ करती है, जुर्माने में इजाफ़ा या एक हुक्म के ज़रिए मुल्ज़म को तहरीरी तौर पर मुतला करेगा इसके ख़िलाफ़ तजवीज़ करदा कार्रवाई और इस तरह की बुनियादों पर कार्रवाई करे और इस वजह ज़ाहिर करने की एक माकूल मौका भी दे, कार्रवाई के ख़िलाफ़ और ऐसी ज़ाती समाअत का मौका फ़राहम करे। जबकि इसी एक्ट की सेक्शन 70 नज़रसानी से मुतल्लक़ है, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी या कोई दूसरी अपीलेट अथॉरिटी किसी भी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर सकती है। माफ़ी या जुर्माना आयद करने का हुक्म 1 साल के अंदर मुजाज अथॉरिटी या अपील अथॉरिटी के हुक्म से मंजूर किया गया हो, जैसा कि मामला हो सकता है कि अपने आप को मुतमईन करने के मकसद से इस तरह की कार्रवाई या हुक्म की दुरुस्तगी, कानूनी हैसियत या मुनासिबियत और आगे केस के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करते हुए ऐसी अथॉरिटी अहकामात को बरकरार रख सकती है। मुजाज अथॉरिटी या अपीलेंट अथॉरिटी का जैसा कि मामला हो सकता है होना या मुजाज अथॉरिटी को डी. नो इंक्वायरी करने का हुक्म दें या मुसल्लत या जुर्माने में इजाफ़ा करे, इस शर्त के साथ कि कोई हुक्म नहीं मुल्ज़म के लिए मुतसाबाना इस दफ़ात के तहत मंजूर किया जाएगा जब तक कि मुल्ज़म को वजह बताने का मुनासिब मौका दिया गया है। मुजवज़ा कार्रवाई और ज़ाती समाअत का मौका के ख़िलाफ़ एक साथ एक्ट का सेक्शन 19 बताता है कि एक मुल्ज़म दीगर सेक्शन 2H1 में मज़कूरा मुल्ज़मान के मुकाबले में हतमी तौर पर परेशान। सेक्शन 16 या 17 मई के तहत 30 दिनों के अंदर आर्डर पास किया गया। आर्डर के मवासलात की तारीख पंजाब में अपील को तरजीह दें। सर्विस ट्रिब्यूनल
पारा नंबर 10 मिली भगत से पंजाब पुलिस कारकर्दगी और नज़्म ज़ब्त के कवायद 1975 कायदा 12 को ख़त्म नहीं किया जा सकता जिसका तल्लक भी। अभी हम इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 152 2020 seconds. Page number 6 Powers of revision by the Inspector General, Additional Inspector General. A Deputy Inspector General of Police or a Superintendent of Police who may call for the records of awards made by their subordinates and confirm, enhance, modify or annul the same, or make further investigation or direct such to be made before passing orders. And it is further accentuated that where the officer proposes to enhance an award of punishment, he shall, before passing final order, give the defaulter concerned an opportunity showing cause why his punishment should not be enhanced. Nevertheless, the right of appeal is provided under Rule 14 against the order of dismissal, removal from service, compulsory retirement, reduction in rank or timescale, forfeiture of approved service and imposition of fine, with much emphasis that there shall be one appeal only from the original order and the order of the appellate authority shall be final, which means that no civil servant can file the revision as a matter of right. But it is the suo motu powers of the authority, and in case of adverse action imposed by exercising right of revision by the competent authority, the aggrieved person may approach the tribunal. 11. The Latin term, sua sponte, translates to, of his, her, its or their own accord, while the term, suo motu, means, on its own motion, which intrinsically articulates an act of authority which, by and large, are applicable to the proceedings where a judge takes action, without a prior motion or request from the involved parties, or catches hold of an issue on its own motion without any soliciting or advocating from either party. An additional expression is, nostra sponte, which also means, of our own accord. In the literal sense, the term, review, alludes to reconsideration or re-examination in which the court or authority may have another look at its own order or decision for correcting any errors or mistakes apparent on the face of the record, with the sole aim and objective of rectifying its own errors in order to avoid any miscarriages of justice, or embarking upon the overlooked aspects of a case. In fact, it is a mechanism for the same court or authority to reassess and re-evaluate its order or decision for endorsing justness and accurateness in the legal course. While the all-encompassing objective of revisional jurisdiction is to revise an arbitrary, capricious, or irregular order and judgment of subordinate courts or authorities, correcting its flaws or defects. It is clear beyond any shadow of doubt that under Section 17 of the Punjab Employees Efficiency, Discipline and Accountability Act, अभी हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। सेक्शन सफ़ा नंबर 6, इंस्पेक्टर जनरल एडिशनल इंस्पेक्टर के ज़रिए नज़रसानी के इख्तियारात। जनरल एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट पुलिस जो अपने ज़रिए बनाए गए अवार्ड्स के रिकॉर्ड तलब कर सकती है। मुतहद और तस्दीक, इजाफा, तरमीम या मनसूख करना या बनाना, मज़ीद तफ्तीश का हुक्म देने से पहले इस तरह के हदायत और इस बात पर मज़ीद ज़ोर दिया जाता है कि अफसर कहाँ इजाफा करने का तजवीज़ रखता है। सज़ा का एक अवार्ड और हतमी हुक्म देने से पहले देगा। डिफ़ॉल्टर एक मौके से मुतल्लक है कि इसकी सज़ा की वजह बताए। इजाफा नहीं किया जाना चाहिए, बहरहाल फील का हक फराहम किया जाता है। कायदा नंबर 14 के तहत बरतरफी, सर्विस से बरतरफी के हुक्म के खिलाफ लाजमी रिटायरमेंट, रैंक या टाइम स्केल में कमी, ज़ब्ती, बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ सर्विस और जुर्माने के नफाज की मंजूरी दी गई है। असल हुक्म और हुक्म से सिर्फ एक अपील होगी। अपीलेंट अथॉरिटी हतमी होगी, जिसका मतलब ये है कि कोई सरकारी मुलाजिम नहीं कर सकता। हक के मामले के तौर पर नज़रसानी फ़ाइल करें, लेकिन ये खुद मुख्तियारी के इख्तियारात हैं। इख्तियार और के हक का इस्तेमाल करते हुए आयद करदा मनफी कार्रवाई की सूरत में
मुजाद अथॉरिटी की तरफ से नज़रसानी मुतासरा शख्स रब्ता कर सकता है। ट्रिब्यूनल नंबर 11 लतीनी इस्तिलाह स्पोंटो का तर्जुमा इसके या इनके अपनी मर्जी, जबकि इस्तिलाह सो मोटो का मतलब है कि अपनी हरकत पर, जो बातनी तौर पर अथॉरिटी के अमल को बयान करता है जो बड़े पैमाने पर है। इस कार्रवाई पर लागू होता है जहां जज कार्रवाई करता है बगैर ए मुलव्वस फरीकैन के जनाब से पेशगी तहरीक या दरख्वास्त या किसी को पकड़ना। किसी भी दरख्वास्त या वकालत के बगैर अपनी ही तहरीक का मसला पार्टी एक इजाफी इजहार नोस्ट्रा स्पोंटी, जिसका मतलब है कि हमारी अपनी मर्जी से लफ्जी मानी में इस्तिलाह जायज़े की तरफ इशारा करती है। दोबारा गौर या दोबारा जांच, जिसमें अदालत या अथॉरिटी कर सकती है किसी भी गलती को दुरुस्त करने के लिए, इसके अपने हुक्म या फैसले पर एक और नज़र डालें या रिकॉर्ड के चेहरे पर ज़ाहिर होने वाली गलतियों का वाहिद मकसद और किसी भी इस्कात हमल से बचने के लिए इसकी अपनी गलतियों की इस्तिलाह का मकसद, इंसाफ या किसी केस के नज़रअंदाज किए गए पहलू पर गौर करना। असल में यह है कि एक ही अदालत या अथॉरिटी के लिए दोबारा तशखीस और दोबारा जायज़ा लेने का तरीक़ाकार में इंसाफ और दुरुस्तगी की तौसीक के लिए इसका हुक्म या फैसला कानूनी कोर्स, जबकि नज़रसानी का हमगीर मकसद दायरा अख्तियार किसी सवाबदीद मनहूस या फासद हुक्म पर नज़रसानी करना है। मुतअद्दिद अदालतों या हकाम का फैसला इसके खामियों को दुरुस्त करना है या नकाइस या बात किसी भी शक व शुबा पर बिलातर के सेक्शन 17 के तहत पंजाब मुलाजमीन की कारकर्दगी, नज़्म ज़ब्त और इत्साब का एक्ट। अभी हम इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 2006, the powers of revision are on its own motion and not on application of any aggrieved person. Likewise, under Rule 12 of the Punjab Police, Efficiency and Discipline Rules, 1975, the provision of revision is also exercisable on its motion of the authorities mentioned in the rules. And there is no opportunity provided under the rule to file revision as a vested right. However, one thing is common in both the aforesaid provisions, that in the case of any enhancement of sentence or punishment intended in exercise of revisional powers, the said authority may provide opportunity of showing cause to such person as to why the punishment should not be enhanced. 12. If we draw a comparison of the aforesaid provisions with Section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908, CPC, we will have a clear distinction that under Section 115 CPC, the High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to such High Court and in which no appeal lies thereto. And if such subordinate court appears, a. to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, or b. to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or c. to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity, the High Court may make such an order in the case as it thinks fit. The District Court may exercise the powers conferred on the High Court by subsection 1, in respect of any case decided by a court subordinate to such District Court in which no appeal lies and the amount or value of the subject matter whereof does not exceed the limits of the appellate jurisdiction of the District Court. The significant distinctiveness of Section 115 CPC is that besides exercising suo motu powers of revision, the powers of revision can also be exercised on the application of a person. Likewise, under Section 439 of the Code of Criminal Procedure, 1898, crossing page C, which also pertains to the High Court's powers of revision, it is clearly envisaged that in the case of any proceeding the record of which has been called for by itself or which otherwise comes to its knowledge, the High Court may, in its discretion, exercise any of the powers conferred on a court of appeal by Sections 423, 426,
427 and 428, or on a court by Section 338, and may enhance the sentence, but no order under this section can be passed unless the accused is given an opportunity of being heard either personally or by a pleader in his own defense. However, under subsection 5, it is lucidly articulated that where under the Code an appeal lies and no appeal is brought, no proceedings by way of. ابھی ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. صفحہ نمبر 7. 2006 نظر ثانی کے اختیارات اس کی اپنی تحریک پر ہے کہ نہ کہ کسی بھی متاثرہ شخص کی درخواست. اس طرح کے قاعدہ نمبر 12 کے تحت پنجاب پولیس ایفیشنسی اور ڈسپلن رول 1975 کی دفعات اس میں مذکورہ حکام کی تحریک پر بھی نظر ثانی قابل عمل ہے. قوانین اور قاعدے کے تحت فائل کرنے کا کوئی موقع فراہم نہیں کیا گیا ہے. ایک مخصوص حق کے طور پر نظر ثانی تاہم دونوں میں ایک چیز مشترکہ ہے. مذکورہ بالا دفعات کی سزا میں کسی اضافے کی صورت میں یا سزا کا مقصد نظر ثانی کے اختیارات کے استعمال میں مذکورہ اتھارٹی ایسے شخص کو وجہ بتانے کا موقع فراہم کر سکتا ہے کیونکہ سزا میں اضافہ نہیں کیا جانا چاہیے. نمبر 12. اگر ہم سیکشن 115 کے ساتھ مذکورہ والا دفعات کا موازنہ کریں کوڈ آف سول پروسیجر 908 سی پی سی کے بارے میں ہمارے پاس واضح ہوگا کہ یہ امتیاز ہے کہ سیکشن 115 سی پی سی کے تحت ہائی کورٹ طلب کر سکتی ہے کسی بھی کیس کا ریکارڈ جس کا فیصلہ کسی بھی عدالت نے کیا ہو ایسے ہائی کورٹ کو متحد اور جس میں کوئی اپیل نہ ہو، اور اگر اس طرح کے متحد عدالت ظاہر ہوتی ہے اے استعمال کیا ہے اے دائرہ اختیار قانون کے ذریعے اس میں شامل نہیں، یا بی استعمال کرنے میں ناکام رہا ہے اے ایسا دائرہ اختیار، یا سی نے اس کے استعمال میں کام کیا ہے. دائرہ اختیار غیر قانونی طور پر یا مادی بے ضابطگی کے ساتھ ہائی کورٹ کر سکتی ہے. کیس میں ایسا حکم دیا جیسا کہ مناسب سمجھے ضلعی عدالت ہو سکتی ہے. ذیلی دفعہ 1 میں ہائی کورٹ کے دیے گئے اختیارات کا استعمال کرے ایسے ضلع کے متحد عدالت کے ذریعے فیصلہ کردہ کسی بھی مقدمے کا احترام عدالت جس میں کوئی اپیل نہیں ہے اور موضوع کے رقم یا قیمت معاملہ جس کی اپیل کے دائرہ اختیار کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ سیکشن 115 سی پی سی کی نمایاں خصوصیات یہ ہے کہ نظر ثانی کے از خود اختیارات استعمال کرنے کے علاوہ کے اختیارات کسی شخص کی درخواست پر بھی نظر ثانی کی جا سکتی ہے. اس طرح ضابطہ فوجداری کی سیکشن 439 کے تحت 898 سی آر پی سی جس کا تعلق ہائی کورٹ کی نظر ثانی کے اختیارات سے بھی ہے یہ واضح ہے تصور کیا گیا ہے کسی بھی کارروائی کی صورت میں جس کا ریکارڈ موجود ہے بذات خود طلب کیا گیا ہے یا جو دوسری صورت میں اس کے علم میں آئے ہائی کورٹ اپنی صوابدید میں عطا کردہ اختیارات میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتی ہے. سیکشن 423 426 427 اور 428 کے ذریعے اپیل کی عدالت میں یا عدالت میں دفعہ 338 کے ذریعے اور سزا میں اضافہ کر سکتا ہے لیکن اس کے تحت کوئی حکم نہیں ہے. سیکشن پاس کیا جا سکتا ہے جب تک کہ ملزم کو موقع نہ دیا جائے یا تو ذاتی طور پر یا کسی وکیل کے ذریعے اپنی دفعہ میں سنا جائے. البتہ ذیلی دفعہ 5 کے تحت یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ضابطہ کے تحت کہاں ہے ایک اپیل چھوٹ اور کوئی اپیل نہیں لائی جاتی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. ابھی ہم اس کے اگلے پیج پر چلتے ہیں. 2020 seconds. Page number 8 revision shall be entertained at the instance of the party who could have appealed. While under section 439A, crossing page C. Similar powers are made available to the sessions judge in the case of any proceedings before a magistrate. But then again, it is somewhat noteworthy that under section 440, crossing page C, no party has any right to be heard either personally or by pleader before any court when exercising its powers of revision, provided that the court may, if it thinks fit, when exercising such powers, hear any party either personally or by pleader, and that nothing in this section shall be deemed to affect section 439, subsection 2. But no right to file revision is available under section 17 of the Punjab Employees Efficiency
Discipline and Accountability Act, 2006 and Rule 12 of Punjab Police, Efficiency and Discipline Rules, 1975. Obviously, in case of any adverse findings or punishment or enhancement of punishment imposed in exercise of suo motu powers of revision within the time frame, the aggrieved person may approach the service tribunal for redress, but the fact remains that revision cannot be filed as a matter of right and in case of rejection or dismissal of departmental appeal, the aggrieved employee should file the appeal before the tribunal rather than filing revision petition or waiting for the decision of revision by the competent authority, which is in fact detrimental and prejudicial to the own interest of such person who, despite having in hand an adverse order passed against him in the departmental appeal, prefers to file revision petition, which is not a vested right, but such provision is provided to exercise suo motu powers and not based on the condition to reply by an aggrieved person. Every now and then, due to this misunderstanding and uncertainty, the actual and vested right of appeal becomes time-barred and the learned tribunal dismisses the service appeal service, rightly so, on the ground that the appeal has not been preferred against the order passed in departmental appeal but against the order passed in the revision, while the law provides only one right of departmental appeal. Here again, we would like to recap and elucidate that in case any adverse order is passed under suo motu powers of revision against any person, then obviously he can approach the tribunal against the adverse order being an original one, but it is not meant as a remedy to cure the orders passed by the competent authority in the departmental appeal to hear it as a second appeal, for which the direct remedy in the form of appeal is already provided before the concerned service tribunal. ابھی ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. صفحہ نمبر 8. نظر ثانی پارٹی کے کہنے پر کی جائے جو بھی ہو سکتی ہے اپیل کی، جبکہ دفعہ 439 سی آر پی سی اے کے تحت اس طرح کے اختیارات بنائے گئے ہیں. سے پہلے کسی بھی کارروائی کے معاملے میں سیشن جج کو دستیاب ہے مجسٹریٹ، لیکن پھر یہ کس حد تک قابل ذکر ہے کہ نیچے دفعہ 440 سی آر پی سی کسی بھی فریق کو ذاتی طور پر سننے کا حق نہیں ہے یا کسی بھی عدالت کی روبرو وکیل کے ذریعے، جب اس کی نظر ثانی کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، بشرطے کہ عدالت اگر مناسب سمجھے ایسی مشق کرتے وقت کر سکتی ہے کہ اختیارات کسی بھی فریق کو یا تو ذاتی طور پر یا وکیل کے ذریعے سنتے ہیں، اور یہ کچھ نہیں. اس سیکشن میں دفعہ 439 ذیلی دفعہ 2 کو متاثر سمجھا جائے گا، لیکن پنجاب کے سیکشن 17 کے تحت نظر ثانی فائنل کرنے کا کوئی حق دستیاب نہیں ہے. ملازمین کی کارکردگی کے نظم و ضبط اور احتساب ایکٹ 2006 اور قاعدہ پنجاب پولیس کی 12 کارروائی اور نظم و ضبط رولز 1975 ظاہر ہے میں کسی بھی منفی نتائج یا سزا یا اضافے کی صورت میں کے نظر انداز کی از خود اختیارات کا استعمال میں سزا دی گئی وقت کے حد تک متاثرہ شخص سروس ٹریبیونل سے رجوع کر سکتا ہے ازالہ کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظر ثانی کو بطور معاملہ دائر نہیں کیا جا سکتا. حق اور محکمانہ اپیل کے مسترد یا برخاست ہونے کی صورت میں متاثرہ ملازم کو اپیل دائر کرنی چاہیے، بلکہ ٹریبیونل کے سامنے کرنی چاہیے. نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے یا نظر ثانی کے فیصلے کا انتظار کرنے کے بجائے مجاز اتھارٹی کو، جو حقیقت میں نقصان دہ اور متعصب ہے، ایسے شخص کا اپنا مفاد جس کے ہاتھ میں نقصان ہونے کے باوجود اس کے خلاف محکمانہ اپیل میں حکم امتناعی دائر کرنے کو ترجیح دی ہے. نظر ثانی کی درخواست جو کہ کوئی حق نہیں ہے، لیکن اس طرح کی فراہمی یا سو موٹو اختیارات استعمال کرنے کے لیے فراہم کیے گئے ہیں، نہ کہ شرط پر ایک پریشان شخص کی طرف سے درخواست ہر وقت اور پھر اس کی وجہ سے غلط فہمی اور غیر یقینی صورتحال کا اثر اور ذاتی حق اپیل وقت ہو جاتی ہے اور سیکھا ہوا ٹریبیونل اس خارج کر دیتا ہے. سروس اپیل سروس بجا طور پر اس بنیاد پر کہ اپیل نہیں کی گئی ہے، محکمانہ اپیل میں منظور کیے گئے حکم کے خلاف ترجیح دی گئی، لیکن نظر ثانی میں یا پاس کردہ حکم کے خلاف، جبکہ قانون صرف ایک فراہم کرتا ہے
महकमाना अपील का हक। यहाँ एक बार फिर हम कैप करना चाहते हैं और इस बात की वजाहत करेंगे कि अगर अज खुद नोटिस के तहत कोई मनफी हुक्म दिया जाता है किसी भी शख्स के खिलाफ नजरसानी के इख्तियारात तो जाहिर है वो रुजू कर सकता है। ट्रिब्यूनल के खिलाफ मुखालफाना हुक्म असल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मजाज की तरफ से मंजूर करदा अहकामात को ठीक करने के इलाज के तौर पर मुराद महकमाना अपील में अथॉरिटी इसकी दूसरी अपील के तौर पर समाअत करे जिसका बराह रास्त इलाज अपील की सूरत में पहले ही फराहम किया जा चुका है मुतल्लिका सर्विस ट्रिब्यूनल। अभी हम इसके अगले पेज पर और लास्ट पेज पर चलते हैं। 1020 seconds. Page no 913. In the case of Ahmed Ali versus Inspector General, Punjab Police and others, 1990 SCMR 1450. It was held that the tribunal refused to condone the delay on the ground that the petitioners had no right to file revision or second appeal to the Inspector General Police and the time consumed could not be allowed for extension of time prescribed for filing appeals before the tribunal. This court further held that the view taken by the service tribunal suffers from no legal infirmity and no case for leave to appeal is made out, hence leave to appeal was refused. According to the facts in the case of Muhammad Yaqub versus District Police Officer, District Sahiwal and others, 2006 SCMR 310, a civil servant, instead of assailing order of departmental authorities before the service tribunal, preferred revision under R12 of the Punjab Police, Efficiency and Discipline Rules, 1975, which was also rejected. He filed an appeal before the service tribunal, which appeal was dismissed being time-barred. He took the plea that the appeal before the service tribunal was within limitation as the same was filed after rejection of revision under R12 of the Punjab Police, Efficiency and Discipline Rules. 1975. The court held that the civil servant could not seek shelter behind R12 of Punjab Police, Efficiency and Discipline Rules, 1975. And could not take its benefit for the reason that no such right was given in special law, which has an overriding effect. Although the revision contemplated by the Punjab Police, Efficiency and Discipline Rules, 1975, had given the right to the Inspector General of the Police to revise the order of the departmental authority in the circumstances given in the rule itself. But the rule did not vest any right in the accused civil servant to file a revision as a matter of right. 14. In view of the above discussion, we do not find any illegality or perversity in the impugned judgment passed by the learned tribunal. This civil petition was fixed for hearing on the 23rd of November 2023 and for the reasons to be recorded later. It was dismissed and leave was refused. Above are the reasons for our short order of even date. Judge Islamabad, the 23rd of November 2023. Khalid approved for reporting. सफ़ा नंबर 913। अहमद अली बामुकाबला के मुकाबले में इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस और दीगर 1990-1450 SCMR ये मुनक्कद किया गया था कि ट्रिब्यूनल ने इनकार कर दिया। इस बुनियाद पर तखीर से माजरत करते हैं कि दरख्वास्त गुजार को दायर करने का कोई हक नहीं है। नज़रसानी या दूसरी अपील इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और वक़्त से इस्तेमाल शुदा को फ़ाइल करने के लिए मुकर्रर वक़्त में तोसी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रिब्यूनल के सामने अपील इस अदालत ने मज़ीद मौका इख्तियार किया कि सर्विस ट्रिब्यूनल की तरफ से किसी कानूनी कमज़ोरी का शिकार नहीं है और ना ही कोई मकसद है अपील करने की इजाज़त दी गई है, इसलिए अपील करने की इजाज़त से इनकार कर दिया गया है। मोहम्मद यकूब बामुकाबला केस में हकूक़ के मुताबिक ज़िला पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साहिवाल और दीगर SCMR 2006 SCMR 310 एक सिविल नौकर महकमाना हुक्म के खिलाफ हुक्म पर हमला करने के बजाय सर्विस ट्रिब्यूनल पंजाब पुलिस के
رول 12 کے تحت نظر ثانی کو ترجیح دی۔ رولز 1975 جس سے بھی مسترد کر دیا گیا ہے، اس نے دائر کیا ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن سروس ٹربیونل کے سامنے ایک اپیل جسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ وقت کی پابندی انہوں نے وضاحت کی کہ اپیل سروس کے روبرو ٹربیونل حد کے اندر تھا کیونکہ اسے مسترد ہونے کے بعد دائر کیا گیا تھا۔ پنجاب پولیس کے R12 کے تحت نظر ثانی کارکردگی اور نظم و ضبط رول 1975 عدالت نے قرار دیا کہ سرکاری ملازم طلب نہیں کر سکتا۔ پنجاب پولیس کارکردگی اور نظم و ضبط رول نمبر 12 کے پیچھے پناہ 1975 اور اس کا فائدہ اس وجہ سے نہیں اٹھا سکتا کہ ایسا کوئی حق نہیں خصوصی قانون میں دیا گیا تھا جس کا اثر غالب ہے۔ اگرچہ پنجاب پولیس کی طرف سے نظر ثانی پر غور کیا گیا، کارکردگی اور ضبط رول 1975 نے انسپکٹر جنرل آف پولیس کو یہ حق دیا ہے کہ حالات میں محکمانہ اتھارٹی کے حکم پر نظر ثانی کرے۔ قاعدہ میں ہی دیا گیا، لیکن قاعدہ نے ملزم کو کوئی حق نہیں دیا کہ سرکاری ملازم حق کے معاملے کے طور پر نظر ثانی دائر کرے۔ نمبر 14 مندرجہ بالا بحث کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی غیر قانونی یا سیکھے ہوئے ٹربیونل کی طرف سے سنائے گئے متنازع فیصلے میں کچ روئی یا دیوانی پٹیشن 23/11/2023 کو سماعت کے لیے مقرر کے لیے کی گئی تھی، بعد میں درج کرنے کی وجوہات سے برخاست کر دیا گیا اور چھٹی سے انکار کر دیا گیا، اور اوپر ہمارے یکساں طریقے مختلف ترتیب کی وجوہات ہیں۔ جج اسلام آباد 23/2023 approved for reporting. It's judgment of at service. Please share and subscribe to this channel for the motivation purpose and send this judgment to the other people for the benefit. Please share and subscribe to my channel. Take care and Allah Hafiz and pray for me.